Hello to everyone. Welcome to excelNsee IAS. In today's edition, we are going to discuss some of the important current affairs via question and answers, and we'll also take some previous year questions. So friends, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपने शुरुआत कोट से करेंगे। आज का कोट अब्राहम लिंकन सर के द्वारा दिया गया है। उनका कहना यह है, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। फ्रेंड्स, हमारा जो फ्यूचर है, आज हमारा फ्यूचर हमारे प्रेजेंट पे डिपेंड है। अगर हम प्रेजेंट में हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे इन द राइट डायरेक्शन, तो हमारा फ्यूचर हमारे प्रेजेंट से तय होता है। Now friend, we are going to start. First question is, what is section 66A of the Information Technology Act 2000? तो फ्रेंड्स, ये भी न्यूज में है क्योंकि सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट 2000 ये 2015 में एक लैंडमार्क जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसको स्ट्रक डाउन किया गया था थ्रू द केस ऑफ श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. But friends, what is the objective of this section 66? So this act was criminalizing the sending of offensive messages through computer, other communication devices such as mobile phone or tablet, and those persons who are found into this, they were jailed for 3 years. So this was the basic thing of section 66A of Information Technology Act 2000. Now friend, the next issue. What is Istanbul Convention? You can see in the picture, Istanbul Convention recognizes violence against women. So it is considered as violation of human right और एक वुमेन्स के अगेंस्ट एक डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है. और इस्तांबुल कन्वेंशन इट ऑफर्स प्रैक्टिकल टूल्स टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, देयर सेफ्टी एंड उनको एक एम्पावरमेंट करना है. It links this to the wider goal of achieving equality between women and men. Now the next question is, Unity 22 mission was in news in the context of. तो इसमें हमारे एक इंडियन ओरिजिन श्रीषा बांडला जी, he said to become the second Indian born woman to fly into space after कल्पना चावला. तो ये इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं. तो ये 6 क्रू मेंबर की पार्ट हैं. तो इनके साथ एक रिचर्ड ब्रैंसन वर्जिन गैलेक्टिक फ्लाइट, जिसको बोला VSS यूनिटी, तो ये 11 जुलाई को न्यू मैक्सिको से टेक ऑफ होगा. श्रीषा बंडला, शी वॉज बोर्न इन तेनाली, अ सिटी इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. तो शी वॉज रेस्ड इन हाउस्टन टेक्सास इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. इसके अलावा जो रिचर्ड ब्रैंसन है, जो फाउंडर है वर्जिन ग्रुप के, तो he is going to become the first billionaire to go into space. ये जेफ बेजोस का भी से पहले जाने वाले हैं. This mission will be the 22nd flight test for VS Unity and the 4th crewed space flight of Virgin Galactic. Now friend, what is Project Bold? Project Bold full form is Bamboo Oasis on Lands in Drought. सो ये दिस फर्स्ट काइंड ऑफ एक्सरसाइज जो इंडिया में होने जा रहा है, और इसको एक ट्राइबल विलेज से लॉन्च किया, जिस गांव का नाम है निचाला मांडवा इन उदयपुर राजस्थान. तो इसका फंक्शन यही है कि इट इज गोइंग टू क्रिएट बैम्बू बेस्ड ग्रीन पैचेस इन एराइड एंड सेमी एराइड लैंड जोन्स. तो जैसे कि हमें पता है कि राजस्थान ड्राई एरिया है, तो वहां पर ये एक ग्रीनरी का काम करेगा, और इससे क्या होगा, इट इज गोइंग टू रिड्यूस लैंड डिग्रेडेशन एंड इट ऑल्सो गोइंग टू प्रिवेंट डेजर्टिफिकेशन. तो बैम्बूज के अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, दे आर ऑल्सो नोन फॉर कंजर्विंग वाटर, reducing evaporation of water from the land surface. So this is a very important feature, this is bamboo in the arid and drought prone regions. Now friend, the next question is that write a short note on India Africa Agriculture Cooperation. तो जब हम इंडिया अफ्रीका एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, तो हम इसमें एक इंस्टीट्यूशन लेवल पे बात करते हैं. वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल कैपेसिटी बिल्डिंग. तो इसमें से कुछ इनिशिएटिव भी लिए गए हैं, जैसे कि इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट मालवी
extension of soft loan, supply of machinery, acquisition of farmlands, and the presence of Indian businessmen in the African agriculture system, जो बहुत अच्छी बात है. और हमारे जो इंडियन फार्मर्स हैं, दे हैव परचेस्ड ओवर 6 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन अफ्रीका फॉर कमर्शियल फार्मिंग. इससे क्या होगा, हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स वहां पर जाएंगे और वहां पर भी काफी एम्प्लॉयमेंट होगा. वहां से वी कैन export to the other countries. So it is going to provide a massive employment as well as to the people of Africa. It will also help India in its soft foreign policy diplomacy. तो अगर हम केस स्टडीज लेते हैं, जो हमारा केरला गवर्नमेंट है, दे आर इम्पोर्टिंग अराउंड 8 टन्स ऑफ रॉ कैश्यू नट्स. और एक प्रपोजल भी दिया गया है कि जॉइंटली ओन ब्रांड ऑफ अफ्रीका कोलम कैश्यू पे काम होगा. सो फ्रेंड्स, these kind of ideas, they encourage state governments and civil societies to identify opportunities and invest directly. Now friends, we are going to discuss some of the UPSC previous year question. The question number 6 is, the fundamental objects of Panchayati Raj is to ensure which among the following: people's participation in the development, political accountability, democratic decentralization, financial mobilization. So friend, the answer is 1 and 3rd. So the option C is the answer. So this question is directly picked from the Panchayati Raj system, which is given in Lakshmikant. Now the next question is, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, it is a provision made in fundamental duties. Please go through the fundamental duties chapter, and this line is picked directly from that. So friend, this is the video for today. Please stay fit and fine. Thank you.